So in the previous videos, we have completed the first phylum Porifera, phylum Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes. Now, in these videos, we are going to discuss the another phylum, and the another phylum is Annelida. Okay. The word itself indicates its meaning. Annelida, matlab annulus. And annulus means ring-like structure, ring. Hence, the name phylum Annelida, as per the Latin words, right? So, जो फ्रेम हमने ये फाइलम स्टडी करने के लिए बनाई है, उस हिसाब से फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बॉडी में रिंग्स है, सेगमेंट से बनी हुई है, हेंस द बॉडी इज सेगमेंटेड. बॉडी कैसी है? बॉडी इज सेगमेंटेड. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड जनरल पॉइंट, कंसिडरिंग हैबिटेट. हैबिटेट कैसे है? कहाँ रहते हैं? वेयर दे आर लिविंग. तो फर्स्ट, दे आर फ्री लिविंग. कैसे है? दे आर फ्री लिविंग. दूसरा, दे आर एक्वाटिक ऑल्सो. थर्ड, दे आर टेरेस्ट्रियल. And sometimes they are parasites. That is important. Sometimes they are कैसे हैं? Parasites. So this is the second general characteristics considering their habitat. Now, as per our frame, the second point is special characteristics. Special characteristics. राइट. कौन सी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कंसीडरिंग द मेंबर ऑफ एनालिडा? तो बॉडी सरफेस, मेंबर ऑफ एनालिडा के जो बॉडी सरफेस है, बॉडी सरफेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनालिडा इज डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली. द बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट किसमें? इनटू सेगमेंट्स. बॉडी के ऊपर क्लियर कट, और बॉडी इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. हेंस ये सेगमेंट से बनी हुई है. हेंस दे आर द मेंबर ऑफ Annelida. Annulus, ring-like structure, segments. So this is ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? मेंबर ऑफ एनालिडा. क्या है? बॉडी सरफेस जो है वो डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स, एंड देयरफॉर द नेम एनालिडा. अनदर इंपॉर्टेंट कि ये जो मेंबर्स है एनालिडा के, दे पजेस, उन लोगों में क्या इंपॉर्टेंट है? दे पजेस longitudinal and circular muscles. क्या है? They possess longitudinal and circular muscles. The body bears, the body possess. क्या है उन बॉडी, उनके बॉडी में? Longitudinal and circular muscles, and these muscles plays an important role, or these muscles helps in locomotion. So, which is locomotory structure in the member of Annelida? Mostly the longitudinal and circular muscles, right? So, these longitudinal and circular muscle helps in locomotion. नाउ क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि लॉन्जिट्यूडनल मसल्स मतलब क्या एंड सर्कुलर मसल्स मतलब क्या? लॉन्जिट्यूडनल मसल्स मतलब द मसल्स विच रन्स थ्रू आउट द बॉडी. बॉडी में जो पूरे रन्स होते हैं उसे लॉन्जिट्यूडनल कहते हैं. सर्कुलर मतलब जो सर्कल में है. सपोज अगर ये बॉडी है तो दिस इज लॉन्जिट्यूडनल मसल एंड दिस इज सर्कुलर मसल.
Both these muscles helps in the locomotion. That is the another important special characteristics. Third special characteristics, they have a special structure, and that structure is known as nephridia. And these specialized structure helps in excretion. These specialized structure help in excretion and osmoregulation. नहीं, जैसा कि प्लेटिहेलमिन्थस में कहते फ्लेंसेस नेफ्रीडिया, सो यहाँ पर क्या है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया एक स्ट्रक्चर है उनके बॉडी में जो क्या क्या काम करता है, विच हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। वो जो स्ट्रक्चर है दैट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। दिस इज व्हाट द थर्ड। फर्स्ट, body surface segments, longitudinal and circular muscles. Third, nephridia. Fourth one is they possess closed circulatory system. कौन सी सिस्टम है? They have closed circulatory system. And closed circulatory system आप लोगों को पता है कि there are two types of circulatory system. कौन सी? First one is open, second one is closed. Closed हमारे इसमें भी है। एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने एक वीडियो में क्लियर कट कहा है कि क्या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ब्लड नेवर कम्स आउट। ब्लड बॉडी के बाहर नहीं आता है, इट रन्स थ्रू वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, एंड सच सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो एनालिडा में कौन सी सिस्टम है? तो एनालिडा ऑल्सो हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दीज आर व्हाट? दीज आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये होने के बाद देयर आर सम अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स द मेंबर्स ऑफ एनालिडा हैव। एनालिडा में कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कौन से? रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा है? फर्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। ऑर्गेनिजम्स कैसे है? तो ऑर्गेनिज्म इज डायोइसियस। डायोइसियस मतलब सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट। डायोइसियस के अपोजिट होता है मोनोइसियस। डायोइसियस के अपोजिट होता है हर्माफ्रोडाइट। So these are the another two important point जो mention है एनसीईआरटी बुक में। Reproduction in Annelida is sexual, and second one is the member of Annelida is dioecious, and dioecious का मतलब यहाँ है sexes are separate. Now ये जनरल स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कि मेंबर्स कौन से एग्जाम्पल्स है, कौन से मेंबर्स है। सो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड, कौन से एग्जाम्पल्स है? तो एग्जाम्पल्स तीन है। नंबर वन इज नेरीस, नंबर टू इज हिरुडिनारिया। First, Nereis, and second example is Hirudinaria, and third example is earthworm. कौन से? Earthworm. These are the three examples or members which have the common characteristics. And इसलिए इनको इकट्ठा करके एक फाइलम में रखा, and that is Annelida. Right? अब नेरिस कैसा है? तो नेरिस में दो फॉर्म है। नेरिस have aquatic form. This is aquatic annelids. कैसा है? Aquatic annelids. And Nereis is dioecious. And Nereis is dioecious. Nereis is aquatic annelids and dioecious, whereas these are terrestrial and monoecious. Right.
That is what the very important difference between Nereis and Hirudinaria. Nereis is dioecious, but earthworm and leeches. Earthworm and leeches. These are monoecious. Right? That is what vary. So तीन examples हैं आपके इसमें. One is Nereis and second one is Hirudinaria. Nereis कैसा है? Aquatic annelids and dioecious, whereas earthworm and leeches these are monoecious. Right? So these are the three examples. अब नेरिस को अगर स्टडी करेंगे तो नेरिस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. Like that. And यहाँ पर they have the mouth and these are the tentacles. Mouth. And body is divided into segments. Body में क्या है? Body is divided into segments. Such segments. This is segments. And उन segments को हम कहते हैं मेटामर्स. उसको क्या कहेंगे? मेटामर्स. इन नेरिस, नेरिस में क्या है? तो नेरिस ऑल्सो हैव द सच स्ट्रक्चर्स, लैटरल अपेंडेजेस. नेरिस में क्या है? इन नेरिस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लैटरल अपेंडेजेस. दीज आर लैटरल अपेंडेजेस. एंड उसे कहते हैं लैटरल अपेंडेजेस इन नेरिस. इस कहते हैं पैरापोडिया, जो काम करता है लेग के जैसा in order to move. is circular muscles and longitudinal muscles. प्लस नेरिस में क्या है? तो एक्वेटिक एनालिड्स है, एनालिड्स है, डायोइसियस है एंड बॉडी बियर द सेगमेंट्स है. एंड ये जो है दे ऑल्सो बियर द लैटरल अपेंडेजेस. एंड लैटरल अपेंडेजेस क्या कहते हैं? पैरापोडिया. राइट. सो दिस इज व्हाट द नेरिस. राइट. सेकेंड इज हिरुडिनारिया. अगर हम हिरुडिनारिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा. सो यहाँ पे नेरिस को क्या है? नेरिस possess the lateral appendages, उसको क्या कहते हैं? We called it as parapodia. अगर हम फैसियोल हिरुडिनारिया को देखेंगे तो हिरुडिनारिया इज ऑल्सो लाइक दिस इज like Hirudinaria, and Hirudinaria may be also there are the segments. इस टाइप के उसके बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं? also have the segments. This is the anterior and this is the posterior. Anterior you may call it as a sucker, मतलब opening, and this is known as the posterior suckers. And this is Hirudinaria. Right. Important यहाँ पे क्या है? Important focus हमें करना है segments पे. This you labeled it as segments. Right. Hence मेटामर से मेटामेरिक सेगमेंट से इंटरनली एक्सटर्नली सेम सेगमेंट से बने हुए हैं, इसलिए उनको कहा है एनेलिडा, एन्युलस रिंग लाइक structure. So these are what? These are the important points present in annelida. Then इसके बाद का last point, and last point is about the classification of member of annelids considering basis of classification. जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा है कितने बेसिक्स है टोटल? तो 6 बेसिक्स है. फर्स्ट इज नोटोकॉर्ड एंड लास्ट वन इज सेगमेंटेशन. अब तक हम लोगों ने जितने फाइलम स्टडी किए हैं उसमें सेगमेंटेशन नहीं आया था, यहाँ पे सेगमेंटेशन आया है.
because the members of annelids have are made up of the segments, metamers. Hence, their body is segmented. Right? Their body is segmented. So first one is level of organization. Second one is body symmetry. Third one is diploblastic or triploblastic organization. Fourth one is coelom. And last one is segmentation. Last one is segmentation. इनको अगर हम कंसिडर करेंगे तो मेंबर्स ऑफ एनालिट्स कैसे कैसे है. सो फर्स्ट level of organization, so they have organ system level of organization. बॉडी सिमेट्री कौन सी है, तो दे पजेस बायलैटरल बॉडी सिमेट्री, और इसके लिए हमने स्पेशल वीडियोस बनाए. डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, तो दे हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. फोर्थ सिलोम और सिलोमेट है, सुडो सिलोमेट है, ट्रू सिलोमेट है, सो दे आर ट्रू सिलोमेट. कैसे है, ट्रू सिलोमेट. एंड लास्ट considering segmentation, their body is segmented, hence they are segmented. Metamerism, metameric segments. So considering basis of classification, member of annelids कौन से examples है, number one is nereis, number second one is hirudineria, number third one is earthworm. तो कैसे है, level of organization, organ system, bilateral body symmetry, triploblastic, coelomate, true coelomate, and segmented. Right. So we'll consider all that point and उसका एक शॉर्ट में अगर रिव्यू लिया तो क्या है, एन्यूलस रिंग सेगमेंट्स है बॉडी में. उसके बाद में बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क आउट इनटू सेगमेंट्स. देन पजेस लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, एंड वही मसल्स लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. नेफ्रिडिया स्ट्रक्चर है विच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप की है. रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है. डायोइसियस है. नेरिस इज aquatic and monoecious, but hirudineria and leeches are dioecious. These differences आपको याद रखना है. And lastly, the examples. So here we have completed the Annelida. In the next video, we'll discuss the next phylum, and that is very the longest, and that is Arthropoda.